Hello students, the question is the position vectors of two 1 kg particles A and B are given by Ra equals to alpha 1 t square I cap plus alpha 2 t j cap plus alpha 3 t k cap meters and Rb equals to beta 1 t I cap plus beta 2 t square j cap plus beta 3 t k cap meter respectively. Alpha 1 is equal to 1 meter per second square, alpha 2 is equal to 3n meter per second, alpha 3 equals to 2 meter per second, beta 1 is equal to 2 meter per second, beta 2 is equal to minus 1 meter per second square, beta 3 is equal to 4p meter per second, where t is in time, n and p are constants. At t equals to 1 second, modulus of Va is equal to modulus of Vb, and the velocities Va and Vb of the particles are orthogonal to each other. At t equals to 1 second, the magnitude of the angular momentum of particle A with respect to the position of the particle B is square root L kg meter square per second. The value of L is. So, the problem is based on the topic rotational motion, and in this problem there are two particles, particle A and particle B, and both are moving and both are having a mass of 1 kg. So, we have to find out the angular momentum in this problem. So, angular momentum is given by the formula L equals to R cross P, where R is the position vector and P is the linear momentum, and we know that the linear momentum is given by mv. For this particular problem, mass of both the particles are 1 kg each, so m equals to 1. So, we can say that R cross V. Now, the important point is this line, the magnitude of angular momentum of the particle with respect to the position of particle B. So, for this particular problem, we have to find out RAB cross VA, because we have to find out the angular momentum with respect to position. So, that is why we have taken VA only, and for the position vector we have taken the RAB. It means the relative position between two. So, that is the key point here. Now, there are certain conditions also given. The RA and RB, these are not straight away given, these are in terms of constant, and the value of constants are given, which also contains some variables such as n and p. One more condition is given, that at t equals to 1 second, the modulus of velocities Va and Vb are equal, and these are orthogonal, means they are making an angle of 90°. And if they are making an angle of 90°, it means that their dot product is equal to 0. So, we have to utilize all these conditions one by one. So, now let us solve this problem. First of all, Ra, which is the position vector of A, is given by alpha 1 t square I cap plus alpha 2 t j cap plus alpha 3 t k cap. So, from this equation we can calculate the value of velocity by taking the differential of this equation. So, Va comes out to be the differentiation of our equation, which is equal to 2 alpha 1 t I cap plus alpha 2 j cap plus alpha 3 k cap. So, this is the velocity of particle A. Similarly, Rb is given. Rb is given as beta 1 t I cap plus beta 2 t square j cap plus beta 3 t k cap. So, to calculate the velocity of particle B, we have to differentiate above equation. So, Vb becomes, velocity of B becomes beta 1 I cap plus 2 times beta 2 j cap plus beta 3 k cap. So, this is the velocity. Now, the
magnitude of VA and VB are equal at t equals to 1 second. And we have to also calculate the angular momentum at t equals to 1 second. So that's why we can put straight away in these equations t equals to 1. So in this way the equations get simplified. So RA, the position vector of A, it becomes alpha 1 I cap plus alpha 2 j cap plus alpha 3 k cap, whereas RB becomes beta 1 I cap plus beta 2 j cap plus beta 3 k cap. This is RB. Similarly, VA, by putting t equals to 1 in the equation of VA, which we have calculated earlier. So VA comes out to be 2 times alpha 1 I cap plus alpha 2 j cap plus alpha 3 k cap. Similarly, VB becomes beta 1 I cap plus 2 times beta 2 t, t is 1 here, so we have to put the value of t as 1. So 2 times beta 2 j cap plus beta 3 k cap. So this is the value of VB. Now according to the given condition, the modulus of VA and VB are equal. So it means that 2 times alpha 1. Alpha 1 is given as 1. So 2 into 1 and its square. So square root of 2 square, which means 4. Then alpha 2 square. Alpha 2 square, alpha 2 is given as 3n. So the 3n whole square, which is equal to 9n square, plus alpha 3 square. Alpha 3 is given as 2 and the square of 2 is 4. So here is 4. And this is equal to the modulus of B. The modulus of B is square root of beta 1 square. Beta 1 is given as 2. So 2 square is 4. Then 2 beta 2 whole square. Now beta 2 is given as minus 1 and minus 1 multiplied by 2 and its whole square, it becomes 4 again. And beta 3 is 4p. So 4p whole square is 16p square. Now we can remove the square root from both sides. We get 9n square equals to 16p square. It implies that 3n is equal to plus minus 4p. Now let us call this as equation number 1. Now the second condition, that is the relationship between n and p, can be calculated by the second condition given. It is given that VA and VB are orthogonal to each other. So their dot product must be equal to 0. So we have to take the dot product of VA and VB. So I dot I equals to 1, J dot J equals to 1, K dot K equals to 1. We use this particular rule. So we can say that it becomes 2 times alpha 1 beta 1 plus 2 times alpha 2 beta 2 plus alpha 3 beta 3. This is equal to 0. And we know the value of alpha 1 beta 1, alpha 2 beta 2 and alpha 3 beta 3 as they are given in the problem. So this becomes 2 times alpha 1 is 1, beta 1 is 2 plus 2 times alpha 2 is 3n and beta 2 is given as minus 1, then plus alpha 3. Alpha 3 is given as 2 and beta 3 is given as 4p, and this is equal to 0. After solving this, this becomes 4 minus 6n plus 8p is equal to 0, dividing throughout by 2. So this becomes 2 minus 3n plus 8p, this is equal to 0, or we can say that this value becomes 2 plus 8p is equal to 3n. Now you can see from the equation 1, if you put the value of 3n equals to, now here there is some mistake because we have to divide by 2 this equation. So this becomes 4, not 8. So this is 4 basically. So here we have to put 4 basically here also. So 2 plus 4p equals to 3n. Now if we put the value of 3n is equal to 4p plus 4p, then this is invalid because 2 is not equal to 0. So we have to take the negative value, that is 3n equals to minus 4p here. So putting the value
2 plus 4p is equal to minus 4p. So this becomes minus 8p equals to 2, or we can say that the value of p is equal to, this comes out to be minus 1 by 4. Now putting the value of p in equation 1 and taking the negatives one only, negative root only. So we get the value of n is equal to 1 by 3. So in this way n becomes 1 by 3. Now let us solve this on next slide. Now we have to find out L, basically the the angular momentum. So angular momentum is basically r cross p, which is equal to, as we have discussed, this is equal to r a b for this problem, r a b cross v, because m equals to 1 here and we have to take v a basically. Now r a b, to calculate r a b we have to subtract r a, we have to calculate this value, r a b is equal to r a minus r b. Now we have calculated the value of r a and r b earlier, so we can subtract them. So their coefficients are basically alpha 1 for r a, the coefficients are basically alpha 1, alpha 2 and alpha 3, and for r b it is equal to beta 1, beta 2 and beta 3. So straight away we can write in terms of determinant I, j, k. First of all, the first term is basically the coefficient of I, which is alpha 1 minus beta 1. Alpha 1 in the problem given as, the value of alpha 1 is given as 1 and the value of beta 1 is given as 2. So 1 minus 2 is minus 1. So we have to put here minus 1. Then the next term corresponding to the coefficient of j in Ra minus Rb, it is basically alpha 2 minus beta 2. You can easily see that alpha 2 is 3n and the value of n we have calculated as 1 by 3. So alpha 2 becomes 1. So this value becomes 1. So alpha 2 minus beta 2. Beta 2 is given as minus 1. So 1 minus minus 1, which means that here is 3. And the third term is alpha 3 minus beta 3. Alpha 3 is given as 2 and beta 3 is 4p. P we have calculated earlier, which is equal to, the value of p we have calculated minus 1 by 4. So putting this value, we get the third term here. So this is 3 here. Now the third line of this determinant is the coefficient of VA. The coefficient of VA are 2 alpha 1, recall it, it is 2 alpha 1 and alpha 2 and alpha 3. Putting the respective values here, it becomes 2, 1 and 2. Now solving this determinant, we get the expression as I plus 8j minus 5k, and the modulus of L is square root of coefficient of I square, which is equal to 1, plus coefficient of j square, which is 8 square, which is 64, plus coefficient of k square, which is minus 5 whole square basically. So minus 5 whole square means 25. So this value comes out to be square root of 90. And in the problem we have to calculate the value of square root L, where this is L. Inside the square root, this is L here. As you can see from this problem, the magnitude of angular momentum of particle A with respect to position of particle B is square root L. So the result which we get here is square root L is equal to square root L. Comparing these two, so we get the value of L is equal to 90. So the answer is 90 here. So this is the result, which is 90. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है रोटेशनल मैकेनिक्स की. इसमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं दो पार्टिकल्स के आर ए और आर बी के टर्म्स में. आर ए और आर बी की वैल्यूज गिवन है. ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और टाइम के रेस्पेक्ट में दी गई हैं. अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा 3, बीटा 3 इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज दी गई हैं. कुछ की स्ट्रेट अवे कांस्टेंट की फॉर्म में दी गई हैं, कुछ की वेरिएबल की फॉर्म में दी गई हैं, एन और पी वेरिएबल को लेते हुए. दो कंडीशंस गिवन है यहाँ पे. एक तो मॉडुलस ऑफ वी ए बराबर मॉडुलस ऑफ वी बी, यानी वेलोसिटीज जो हैं दोनों पार्टिकल की रेस्पेक्टिव, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर दिया हुआ है. साथ के साथ ये बताया गया कि उनकी जो वेलोसिटीज के वेक्टर हैं
जो वेलोसिटीज हैं बेसिकली वो ऑर्थोगोनल हैं, यानी 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमें बताना है, अगर हमसे कहा गया है कि अगर एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल a का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल b स्क्वायर रूट l है, तो वैल्यू ऑफ l क्या होगी। तो यहाँ हमें जो कैलकुलेशन करनी है, हमारा जो फोकस है वो है एंगुलर मोमेंटम निकालना। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में वो बराबर होता है r क्रॉस p। p होता है लीनियर मोमेंटम जिसे हम mv के बराबर रखते हैं। मास दोनों पार्टिकल्स की 1 kg गिवन है, तो m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो r क्रॉस v। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम r और v क्या लेते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल a का पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल b, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल b ना कहकर पोजीशन ऑफ पार्टिकल b कहा गया है। तो इसलिए जो v ले रहे हैं हम वो केवल va लेंगे, vab नहीं लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो उन दोनों को रिलेटिव फॉर्म में लिखेंगे आर ए बी। तो ये की पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले आर ए बी निकालना पड़ेगा, हमें वी ए निकालना पड़ेगा। गिवन इक्वेशन है हमारे को, केवल जो दो इक्वेशन गिवन है आर ए और आर बी की, वो भी स्ट्रेट अवे गिवन नहीं है, वो भी कुछ सर्टेन वेरिएबल्स के टर्म्स में, कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में गिवन है। तो हमें कंडीशन, जो दो कंडीशन दी गई हैं, वेलोसिटी इसके मैग्नीट्यूड को बराबर दिया गया है और ऑर्थोगोनल दी गई हैं, उन कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है। लेकिन सबसे पहला काम हमें करना है, पोजीशन वेक्टर जो रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं उन पोजीशन वेक्टर से हमें निकालनी है वेलोसिटीज डिफरेंशिएट करके। आर ए से हमें वी ए मिलेगा, आर बी से हमें वी बी मिलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो दो गिवन कंडीशंस हैं वी ए और वी बी के मैग्नीट्यूड बराबर, उन दोनों कंडीशंस को हमने यूटिलाइज किया। तो हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली 9n स्क्वायर इक्वल्स टू 16p स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 3n इक्वल्स टू प्लस माइनस 4p। यहाँ पे दो रूट की फॉर्म में हमने लिखा है। हम आगे देखेंगे कि इसमें से कौन सा रूट हमें यूटिलाइज करना है, कौन सा वैलिड है। फिर उसके बाद ये ऑर्थोगोनल दिए गए हैं, ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर ऑर्थोगोनल दिए हैं, तो हमने डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रख दिया। सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप मिला एन और पी के बीच में, और इसे हमने यूटिलाइज किया। इसे हमने देखा कि 3n बराबर प्लस 4p अगर हम रखते हैं तो ये इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि 2 बराबर फिर 0 बन जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें 3n बराबर माइनस 4p इक्वेशन 1 का जो है उससे लेके वो वैल्यू पुट करनी होगी। इस समय n और p की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू 1/3 मिली, p की वैल्यू -1/4 मिली। ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, इससे कि हमारा आर ए और आर बी जो है सीधे सीधे एक तरह से कांस्टेंट और आई जे के की फॉर्म में स्ट्रेट अवे आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमने फिर जो है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया है। एंगुलर मोमेंटम बराबर आर ए बी क्रॉस वी ए। यहाँ पे आर ए बी भी निकालना पड़ेगा हमें। आर ए बी बराबर होता है आर ए माइनस आर बी, जो कि हम ऑलरेडी आर ए आर बी निकाल चुके हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे आई के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट और जो के कोफिशिएंट है उनको, और साथ में जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं अल्फा बीटा की, जो एन और पी वैल्यू पुट करने के बाद जो आती हैं, वो वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिए हैं दूसरी लाइन में आर ए बी के। फिर उसके बाद हमने वी ए के लिए जो कोफिशिएंट हैं वो हमने पुट कर दिए हैं। वी ए की जो वैल्यू हमारी आई है वेलोसिटी वेक्टर की 2i1 2 अल्फा 1 आई कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप और अल्फा 3 के कैप, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यूज जो हम पुट करेंगे, ध्यान में रखते हुए कि जहाँ अगर हमारा पी एन आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये आती है हमारी रो 2 1 और 2। इसको हमने सॉल्व किया, इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया, जो निकल के आता है स्क्वायर रूट ऑफ 90। हमसे कहा गया है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट एल के बराबर है, तो बताइए एल क्या होगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 90 को स्क्वायर रूट एल के बराबर रख देते हैं, जिससे कि एल की वैल्यू 90 के बराबर आती है। यही हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।